Hi, good evening, everyone. So, beta, today I am going to go ahead and do section 5.3 of Devore, and we are going to cover this entire section today. Okay, let's start. So, first of all, we want to go ahead and we want to understand what is statistics. Now, statistics is basically a science of understanding sample from population. देखो, बट नॉट ऑलवेज द पॉपुलेशन विल बी एट डिस्पोजल. बहुत बारी ऐसा होगा कि आपको पॉपुलेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट? सो वेन एवर योर पॉपुलेशन विल नॉट बी एट योर डिस्पोजल, जब भी आपको पूरी पॉपुलेशन ना पता हो, then a sample will help you gain relevant information from the population. For example, the easiest example can be, let's say I want to know that how are my students performing in mock test, and I don't have the data of all the students, because maybe I have 1,000 students but only 30 students gave the test. Remaining people did not give the test. They did not give the mock test, and I want to get some estimate that how will they perform in the final exam and how they are performing. So in order to go ahead and in order to understand how will the students perform based on the performance of the mock test, what will I do? I will collect the data of this sample, and from this sample I will try to understand कि ठीक है इन 30 बच्चों में किसके marks कितने कितने आए हैं. Based on that, then I will go ahead and I will establish a result कि ठीक है अगर इन बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं तो पूरी पॉपुलेशन के इतने नंबर तो आ जाएंगे, ऐसा बच्चा परफॉर्म करेगा, राइट? So whenever you go ahead and you want to understand something about the population based on the sample के basis पे आप population के बारे में कुछ जानना चाहते हो, then that is called as statistics. वो अपने आप में stat की definition है. So statistics is the science of understanding sample from given population. ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्यों हमें सैंपल के साथ काम करना पड़ता है? सो वी नीड टू वर्क विद द सैंपल बिकॉज नॉट ऑलवेज द पॉपुलेशन विल बी एट योर डिस्पोजल, द पॉपुलेशन विल बी एट योर हैंड. आपके पास हमेशा पॉपुलेशन होगी ही नहीं काम करने के लिए, सो यू विल हैव टू वर्क विद द सैंपल. So sample can be used to understand something about the population. Like for example, bache, I always give this example. What happens during the time of elections? Now, during election, we are not aware about what happens and which party will win. Party A जीतेगी या party B जीतेगी. So during that period of time, what will we go ahead and we will do? We will ask some people कि अच्छा आपने party A के लिए vote किया या party B के लिए vote किया. And based on what people will tell me, then I will gain some information कि अच्छा ठीक है party A जीत सकती है, party B जीत सकती है. So we will go ahead and we will use the sample to understand more information about the population. ठीक है. Now let us go ahead and let us try to consider an example. So for this example, what I have done is I have taken 10 data points. एक population है जिसमें 10 number हैं 1, 2, 3 till 10. And I am asking you to go ahead and collect a sample, and this sample basically is having 2 observation. So out of 10, I am saying to create a sample और उसमें 2 observation होनी चाहिए. It should have 2 observations with it. So what will you go ahead and do? Beta, you can create sample in multiple ways. आप बोल सकते हो कि out of this population from 1 to 10, my sample 1, suppose there are different students. तो मैंने student 1 को बोला कि okay, tell me what the sample will be. और student 1 ने out of these 10 observation number 2 and observation number 5 को choose किया. Maybe student number 2, that student went ahead and chose observation number 3 and observation number 7. तो basically different students can choose different observation. मैंने उन्हें बोला है कि पूरा population में से choose 2 observation. They can go ahead and they can choose any 2 observations. So therefore, what will happen is this will become a random process in itself. क्यों random हो गया? Because out of the 10 observations that I am giving you in a sample, I am asking you to go ahead and choose any 2 observation, and hence the randomization will be involved. Now, suppose beta, I ask you a very basic question that in how many ways can you do this? So you will tell me, ma'am, this is very simple. We have
10 observations in the population, and out of these 10 observation, I need to choose 2 observation to form a sample. So this can be done in 10C2 ways. इतने samples इसमें से हम create कर सकते हैं. So this will give me 10 factorial by 2 factorial, 8 factorial. So 10 into 9 into 8 factorial by 2 into 8 factorial. So 8 and 8 will get cancelled and 45 samples can be created. So you will tell me ki ma'am, out of these 10 observations na, we can create 45 samples without repeating. Okay. So anyways, now coming forward beta. So what we have understood therefore is that going ahead and collecting a sample, that is an uncertain process. उसमें थोड़ी uncertainty involved है क्योंकि कोई भी 2 number आप sample में collect कर सकते हो. Now I just want to focus a bit on the technical words here. So beta, whenever we write capital X1 and capital X2, this actually goes ahead and represents the observation. तो जैसे अगर मैंने आपको बोला कि okay, there is a sample, there is a population, and this population, it goes ahead and it contains n observations, right beta? तो ये जो हमारी observations हैं, these are represented by x1 and x2, right? So I have x1, x2 and so on till xn. Now what you will do, out of these n observations, आपने कोई 2 observations लेके उसका sample बना दिया, right? Now the value of these observations, तो जैसे अगर मैंने आपको बोला कि ठीक है मैम, I told you कि out of these n observation, create a sample of 2 observation. तो आपने क्या किया? You tell me that look ma'am, I am choosing the observation number 2 and I am choosing observation number 10. मैंने बोला okay. Then I ask you what is the value? So you tell me ma'am, observation number 2 का जो value है वो small x1 है and observation number 10 का जो value है वो small x10 है. So the value that you get from there, that is denoted by small alphabets x1 and x2. So small alphabets basically represent the value and capital alphabets basically represent the observation. Clear हुई ये बात? So we can go ahead and we can say that capital X's represent the observation and small x's represent the sample value. Okay, now going one step ahead. Now, we need to understand that whatever task you will perform on the sample, but that will also be a random task in nature. Mane, just try to understand this thing. But I have this population. इस population में बहुत सारे numbers हैं. So it has number 8, 7, 1, 2, 5, 4, 3. ऐसे करके 10 numbers हैं. हाँ. I asked you, okay, from this population create a sample. तो आपने मुझे 2 numbers sample के create करके दे दिए. So you said, okay ma'am, we have collected the sample S1 और ये जो sample है ना, it consists of observation 4 and 2. Then I ask student number 2, beta go ahead and create a sample. So student number 2 created a sample and he collected number 5 and 3. So different students have collected different sample. यहाँ पे जो numbers आएंगे, it will absolutely be random in nature. आपको कुछ और मिलेगा, मुझे कुछ और मिलेगा. So there will be random numbers that will be collected. So it is a random process. These are random variables. अच्छा, अब देखो. बेटा अगर मैं student 1 को बोलूं कि whatever sample you have collected ना, find the mean of that sample. So what will be the mean? 4 plus 2 by 2, 6 by 2, that means 3. And if I ask student number 2 कि बेटा okay, find the mean of your sample. So what will be the mean? So it will be 5 plus 3 by 2, that means 8 by 2, that means 4. So different students जो उनको mean value मिलेगी अपने sample की, that mean will also be different because the sample that they chose was different. So if I can say that the sample is a random thing, it's a random variable, it is random in nature, तो उस पे हम कोई भी process अगर करते हैं, we try to find out its mean, median, mode, variance, whatever process we do on that sample, it automatically becomes random in nature. वो अपने आप से random हो गया. क्यों random हो गया nature में बेटा? क्योंकि वो sample ही random था.
जो आपकी वैल्यू आई वो अलग थी, जो मेरी आई वो अलग थी. इट वॉज अ रैंडम नेचर सैंपल. So if sample was random in nature, then whatever process will be conducted on that sample will also become random in nature. वो भी random हो जाएगा. Right? Okay, so this is what it says. Any task performed on the sample will also be a random variable. ठीक है बेटा? कुछ कुछ वैल्यूज हैं जिस पे मुझे आपको ध्यान दिलवाना है यहाँ पर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड that whenever we talk about population versus sample, the mean of the population is called as mu, and the mean of the sample becomes x bar. Similarly, the variance of the population, that is called as sigma square, and the variance of sample is called as s square. The standard deviation of the population is sigma, and the standard deviation of the sample is S, right? So these are some of the important abbreviations that you have to remember. ठीक है बेटा? Now this is a table given in your book, table 5.1. Let us try to understand this table a bit. थोड़ा समझो यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या किया है ना, उन्होंने बोला कि assume करो कि एक population है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने एज्यूम कर लिया दैट इट इज वीबुल डिस्ट्रीब्यूटेड. इस वर्ड पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है. जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल होता है, वैसे ही वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वी आर नॉट कंसर्न विद इट. उन्होंने यहाँ से जो पॉइंट रखना है, हमें उससे उस पॉइंट को ही हाईलाइट करना है. सो देर इज अ पॉपुलेशन बेटा, देर इज अ पॉपुलेशन इन हैंड, और उस पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल क्रिएट किया है. हाँ, अब ये सैंपल का हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. एंड द पॉइंट इज कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो दैट देयर हैव बीन 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो ये सैंपल स्टूडेंट 1 ने कलेक्ट किया, ये सैंपल स्टूडेंट 2 ने कलेक्ट किया, ये सैंपल स्टूडेंट 3 ने, स्टूडेंट 4 ने, स्टूडेंट 5 ने और स्टूडेंट 6 ने. सो ये अलग अलग सैंपल्स क्रिएट किए गए हैं एंड दीज आर बीइंग क्रिएटेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स. Now what you have to understand is कि हर sample को जो size है that is 10. So the sample size is 10. So if you notice this is sample number 1. इसको assume कर लो student 1 ने sample create किया है. So these are the 10 observations of this sample number 1. Like that you have sample number 2. हाँ बेटा. And these are the 10 observations. अगर student 2 अपना sample create करेगा तो वो ये observation रखेगा. Now what you have to notice here is that these observations they differ. तो जो student 1 का observation रहेंगे, they will be very different from student 2's observation, and in that sense we can go ahead and say that collecting sample is a random process. क्योंकि हर एक का observation differ कर रहा है, so we can go ahead and we can say that collecting sample is a random process. Now here is the sample mean given to you. And then you're also given the sample median and you're also given the sample standard deviation. ये 3 चीजें इस आपको टेबल में given है. Now if you just note down the sample mean, you will notice that the sample mean also differs. तो अगर आप पहला नोटिस करो, इसका sample mean 4.40 है, whereas this sample mean is 4.1, this is 3.6, 5.7. So not only each sample is different, but also the sample mean that is collected, that is also very, very different. So we can say that yes, collecting sample is a random process. The data points of the sample are random in nature, but not only that, the sample mean is also random in nature, right? The sample mean is also random in nature. ऐसे आप देखो कि sample mode का भी जो अलग-अलग sample के mode आ रहे हैं, they are also very, very different. And therefore, we can say that this is also a random variable. That's also a random variable. And same is the case with sample standard deviation. तो हम ये बोल सकते हैं that ultimately not only sample values differ from one student to another, ना ही सिर्फ sample random values से बना हुआ है, but sample का जो mean आ रहा है, mode आ रहा है, standard deviation आ रहा है, वो भी अपने आप में randomized हैं. They are also random in nature. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा दैट द बुक सेज कि ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन थी जिससे हमने ये सैंपल कलेक्ट किया, सपोज उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है
वो 4.4311 है. The mean of that distribution is 4.4311. So what the book suggests is that if you will notice, तो किसी भी सैंपल का मीन 4.4311 नहीं है. It will be very close to population mean. ऐसा नहीं है कि अगर population mean 4.43 है तो सैंपल मीन 100 हो जाएगा. This will not be possible. हाँ, सैंपल मीन will be very close to the population mean. Nevertheless, यहाँ पे एक important point ये आता है जो हमें समझना पड़ेगा, that sample mean and population mean are not the same thing. तो अगर मैं sample mean निकालूं और population mean निकालूं, ये दोनों equal नहीं होंगे. They will not be equal to each other. So just go ahead and see here. Here the sample mean is 4.40, 5.92, 4.42, 4.1, 3.6 and 5.7. So we can clearly see that the sample means are not the same. They are different values. Sample के जो mean आ रहे हैं वो population mean के equal नहीं आ रहे हैं. They are different from the population mean. Right? Okay, बेटा. Now let's look into these 3 points that I have written. First of all, मैंने आपको बता दिया कि इस example में we are taking 6 samples, हर एक का size 10 है. And I have shown to you that each sample has a different mean. And I have shown you that each observation and sample mean are random in nature. तो ना ही सिर्फ सैंपल की ऑब्जर्वेशन रैंडमली आ रही हैं, बट सैंपल का जो मीन है वो भी रैंडम इन नेचर है. दैट इज ऑल्सो रैंडम इन नेचर. क्लियर? ठीक है बेटा. नाउ बेटा, दीज वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? या एक्चुअली नॉट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक बिना एस के, स्टैटिस्टिक. सो स्टैटिस्टिक बेसिकली कोई भी ऐसी चीज है जो हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है. इट इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन और अपने आप में वो रैंडम इन नेचर है. और क्योंकि कोई भी चीज जो रैंडम है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो स्टैटिस्टिक का भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल हो सकता है द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई टॉस अ कॉइन एंड गेट हेड. ठीक है, सपोज मैंने बोला कि मैं 2 टाइम्स एक कॉइन को टॉस कर रही हूं एंड आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी हेड्स आई हैव गॉट. तो बेटा अगर मैं देखूं तो मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. एंड इसमें ये बात बहुत क्लियर है दैट द नंबर ऑफ हेड्स दैट आई कैन गेट, इट कैन बी ईदर 0 और इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2. एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाता है दैट 0 हेड्स का प्रोबेबिलिटी इट अकर्स 1 out of 4 times, 1 head probability it occurs 2 out of 4 times, and 2 head probability it occurs 1 out of 4 times. So any variable which is random in nature has an associated probability distribution with it. उसका एक associated probability distribution होता है, right? So same is the case here बच्चे. तो हमने क्या बोल दिया? We have said कि जो हमारा sample mean आया है ये एक random variable है, क्योंकि ये sample to sample differ कर रहा है, so it is a random variable. And क्योंकि ये एक random variable है, therefore इसका अपने आप में कोई probability distribution रहा होगा. मतलब क्या हो गया? That if I have this population, हाँ, और इससे हर स्टूडेंट ने एक सैंपल मीन निकाला, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, हर एक ने एक एक सैंपल बनाया और इसका इन्होंने सैंपल मीन निकाला. तो इट मे बी पॉसिबल कि शायद फर्स्ट सैंपल मीन 10 आया हो, दूसरा सैंपल मीन 5 आया हो, फिर 4 आया हो, फिर वापस 10 आया हो, एंड सो फोर्थ. तो ये रैंडमली आ रहे हैं सैंपल मीन डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन चूज की होंगी टू फॉर्मुलेट द सैंपल. Now the important part here is that if I go ahead and I create this sample mean, ki what have been the values and what have been their corresponding probability, then that will be a probability distribution. Like for example, I can say that okay, 10 sample mean 10 has occurred in 5 out of 25 samples. Sample mean 5 has occurred in 3 out of 25 samples. तो ये जो sample mean है, we can go ahead and create a probability distribution of the sample mean, and therefore we can go ahead and say that okay, ये अपने आप में random in nature है and it will have an associated probability distribution attached. ये बात clear हो गई? Okay.
नाउ क्योंकि सैंपल मीन जो है, दिस इज गोइंग टू गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन मीन. It is going to help us understand more about the population mean. So we can go ahead and we can say that it is called a statistic. तो एक स्टैटिस्टिक क्या क्या है बच्चे? व्हाट इज अ स्टैटिस्टिक? ध्यान से समझने की कोशिश करो स्टैटिस्टिक को. अ स्टैटिस्टिक इज एनीथिंग विच इज अ रैंडम वेरिएबल. बिकॉज इट इज रैंडम इन नेचर, उसकी एक अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रही होगी. इट विल हैव एन अटैच्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद इट, एंड दिस इज हेल्पिंग मी गेन more information about the population. तो जैसे यहां पर मुझे x बार हेल्प कर रहा है ये पता करने में कि पॉपुलेशन का मीन क्या रहा होगा. यूजिंग दीज x बार, यूजिंग दीज सैंपल मीन्स, I can get some information about the population mean. I will tell you how to get that information. वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. But I can go ahead and I can get some information about the population mean based on the sample mean. So this is now therefore a statistic. इसको हम क्या बोल देंगे? We will call this as a statistic. Am I clear with this part? ठीक है बेटा. Now let's go ahead and read this out. अब एक बात आती है जिसे बोला जाता है पॉइंट एस्टिमेट. तो इस पे हम थोड़ी बात और करेंगे इन द कमिंग क्लासेस. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस. But there is something which is known as a point estimate. Right, beta? Beta, point estimate मतलब एक number. One point means क्या होता है? Dot. One number. So anything which is a point estimate is a single number which is helping you understand more about the population. तो अगर कोई एक सिंगल नंबर मेरे को मेरी पॉपुलेशन को ज्यादा समझने में हेल्प करता है, then that becomes a point estimate. So in this case, because the mean of the sample is helping me understand more about the mean of the population, so I can go ahead and call this as a point estimate. इसको मैं point estimate बोल सकती हूँ, right? So if a single number, जैसे अगर मैं बोलूँ variance of sample helps me understand more about the variance of the population. The standard deviation of the sample helps me understand more about the standard deviation of the population. So if a single thing helps you understand more about the population, then we can go ahead and say कि it will be called as a point statistic. उसको हम एक point statistic बोल देंगे. The sample mean gives information about the population mean. ठीक है बच्चे, this is a definition given in the book. इसको एक बारी हम read कर लेते हैं. Let's read this out. A statistic is any quantity whose value can be calculated from sample data. तो सबसे पहली बात ये है कि how do we calculate the statistic? We calculate the statistic based on the sample data, right? Second, prior to obtaining data, there is uncertainty as to what the value of any particular statistic will be. तो ये बात समझने वाली है कि क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मेरा सैंपल क्या बनेगा, right? For example, in the example I have given you, ठीक है, जैसे अगर हम इस टेबल पे वापस आ जाएं, इफ आई जस्ट लुक बैक इनटू दिस टेबल, तो बेटा इफ माय सैंपल इज दिस, अगर मेरा सैंपल ये बनता है तो मीन की वैल्यू ये होगी. बट अगर मेरा सैंपल ये बनता है तो मीन की वैल्यू ये होगी ना. तो मैं मीन के बारे में तब तक नहीं बोल सकती. आई कैन नॉट टेल अबाउट द मीन टिल द पॉइंट आई डोंट नो व्हाट माय सैंपल इज. तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी स्टैटिस्टिक में, because statistic is going to be a function of what has been collected in the sample. आपने सैंपल में किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टैटिस्टिक का वैल्यू क्या आएगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक, राइट? Therefore a statistic is a random variable. तो book clearly specifies that a statistic will be a random variable and will denoted by an uppercase letter. तो हम रैंडम वेरिएबल को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अ लोअर केस लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कैलकुलेटेड वैल्यू. तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज आती हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस, और रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल अपर केस, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है बेटा, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, नाउ the question is how do we go ahead and create a sample? एक sample को हम कैसे create कर सकते हैं? So we can go ahead and we can create a sample either with replacement or without replacement. बेटा try to understand. With replacement का मतलब ये हो गया
कि सपोज आई टेल यू दैट देयर इज अ पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to till 10, और मैंने स्टूडेंट 1 को बोला कि कोई भी दो नंबर निकालो एंड ही प्लग्स द नंबर 2 and 7 या 2 and 5 से, तो ये दो नंबर्स को या ये दो चिट्स को मैंने इसके अंदर वापस डाल दिया. आई अगेन हैव 10 चिट, और फिर मैंने स्टूडेंट 2 को बोला कि पिक अप एनी टू नंबर्स. सो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो जाता है दैट आई एम पुटिंग दैट सैंपल बैक. जैसे इफ आई टेल यू कि ये इंडिया है और यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स हैं, और मैंने किसी एक सिटीजन को पकड़ के सर्वे कर लिया, तो मैंने उस सिटीजन को वापस इसमें डाल दिया, और वापस मेरे पास वही सेम ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें से मैंने दोबारा किसी सिटीजन को पिक किया. सो देयर इज अ चांस कि शायद यही सिटीजन आप दोबारा भी पिक कर सकते हो, बिकॉज ही विल अगेन बी पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर यू आर पिकिंग. तो दैट बिकम्स विद रिप्लेसमेंट. ऑन द अदर हैंड विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो. सो इफ यू हैव गॉन अहेड एंड कलेक्ट, if you have taken this person और इसको आपने यूज किया to do the survey, then you will just take this person out. He is no more a part of your population. और next time जब आप अपना next survey करोगे, so this person will already be out. He will no more be a part of that, right? ठीक है, so that becomes without replacement. So with replacement में एक चीज ये समझने लायक होगी अब कि it is possible that you get the same value twice. जैसे for example, if I tell you that my population has number 1, 2, 3 till 10, and I ask you, beta, make a sample of 2 observation, तो it is possible कि आप दोनों ही observations को same ले लो. You can take both the observations to be the same observation. तो let's say कि आपने जो 2 observation choose की होंगी, those 2 observation they are 3. वो जब आपने पहली चूज की, इट गोज बैक इनटू द पॉपुलेशन, फिर से आपको चूज करनी है, और अगली बारी भी आपने 3 ही चूज कर लिया. सो इन दैट केस बेटा व्हाट विल बी द सैंपल मीन? योर सैंपल ओनली हैज 2 ऑब्जर्वेशन, और दोनों ही सेम है, क्योंकि जब आपने पहली चिट चूज की 3 की, उसके बाद आपने उस चिट को वापस उसी पॉपुलेशन में डाल दिया, एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू चोज 3 ओनली. सो बेटा व्हाट विल बी द मीन नाउ? मीन विल बी 3 + 3/2, दैट मीन्स 6/2, दैट मीन्स 3. और अगर आपका मीन 3 हो गया, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन इज समेशन xi minus x bar whole square divided by n minus 1. ठीक है, ये सैंपल का वेरिएंस होता है, राइट? सो यू कैन गो ahead and clearly see कि xi and x bar are the same only. And if xi and x bar are the same, तो इनका deviation would be 0. So this would actually be 0 square divided by n minus 1, that means 0. So what you understand from here, that in case that the sample is with replacement, there is a chance that you will go ahead and you will see both the values to be the same. And if both values will be the same, then in that case, the variance of the sample will turn out to be 0. जो आपका sample का variance है, वो 0 हो जाएगा. Am I clear with that part? Okay, beta. So now we need to understand कि because I am creating a sample और sample अपने आप में random है, तो there are 2 things which will formulate 2 conditions which will be required to formulate a random sample. Again beta, this is the next definition which has been used in the book. इस definition को थोड़ा सा पढ़ते हैं हम. The random variable x1, x2 till xn are said to form a random sample of size n if 2 things are satisfied. 2 चीजों का satisfy होना बहुत ही जरूरी है for us to call it as a random sample. अगर हमें sample को random sample बोलना है, तो 2 चीजें satisfied होनी चाहिए. The first thing that should be satisfied is that the xi's are independent random variable. तो हर बारी जब हम एक xi चूज कर रहे हैं, तो उसको independent होना जरूरी है. उसको इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि पिछला xi क्या चूज किया था. Which will happen in case of sample without replacement. It will happen in case of sample without replacement that they will be dependent on each other. Why beta? Let's take an example. So again, I am taking this population from 1 to 10 and I ask you, ठीक है बेटा, choose 2 values but without replacement. So without replacement का क्या मतलब हो गया? That suppose beta you create a sample and you choose the first value to be 3
So the second value cannot be 3. The second value will be any of these remaining 9 values, but it will not be 3. The second value of जो भी choose करोगे, it will be dependent on what first value you have chosen. Because it cannot be 3. आप 3 को दोबारा choose नहीं कर सकते हो. So in case of without replacement, you have to understand that it becomes dependent in nature. And if it becomes dependent in nature, then you need to understand that it will not be an independent random sample. And if it will not be an independent random sample, then it will not be a random sample at all. It will not be a random sample at all. So for it to be called as a random sample, if we need to call it as a random sample, ये बात बहुत ही important है for you to understand that we need that exercise should be independent in nature, and exercise will be independent in nature only and only when you have with replacement. Because in with replacement, I don't care what the last number was chosen. I can still choose any of the 10 numbers. मैं फिर भी अगली बार जाके दोबारा उन 10 में से कुछ भी choose कर सकती हूँ. I can go ahead and choose any of the 10 numbers. Am I clear with it? Okay, beta. The second thing is that every xi has the same probability distribution. So try to understand that all these samples that I'm collecting, they are coming ideally from the same population, right? And therefore, they must have the same population, same distribution, right? Same probability distribution, right? So this is the next thing, therefore, that whenever we talk about every xi, then these should have the same distribution. Now, if these two things are satisfied, that you have independent random variable and they have the same distribution, then such random variables, beta, they are known as IID. That means they are called as independent and identically distributed. Independent and identically distributed. So if these two properties are satisfied, then we can go ahead and say that it is independent and identically distributed. But ये बात important है. This is very nicely written in the book, that I can go ahead and create an IID still if the sample size and population size ratio is less than equal to 0.5 and I have without replacement. तो अभी तक मैंने आपको ये बोला कि with replacement में ही सिर्फ independent create होगा, random variable independent सिर्फ with replacement में होगा, but in without replacement also I can go ahead and I can create. In without replacement also, I can go ahead and I can create IIDs, but ये property satisfied होनी चाहिए. So for example, if I tell you that the sample size is 5 and I tell you that the population size is 100, right? The population size is 100. So what is my n by n? It is going to be 5 divided by 100. That means it is going to be 0.05, clearly less than 0.5. So in this case, I will go ahead and say कि हाँ, although it is without replacement, but still I will be able to create IIDs. बहुत ही rare chance है कि ये जो 100 observation है, इसमें से जो हम 5 observation collect करेंगे without replacement में, they will be dependent on each other. So we will be able to create a independent sample. Am I clear with it? Okay, beta. So I will end this lecture here for today. And in the next lecture, we will continue with section 5.3 and we will try to end this with some questions. And we will be talking about deriving the sampling distribution. Okay, beta. Thank you.